Good morning, students. So let's continue exercise 7.3. Question number 6a, that is y equals to x to the power y. We have to find out dy or dx. So since y is in the power of x, so answer number 6a, y equals to x to the power y. So here y is in the power of x. So ये जो हमारा फंक्शन है, this is in the form of x to the power x, x to the power y, y to the power x and y to the power y. इन चार फॉर्म में से ये जो है हमारा इस सेकंड टाइप का फॉर्म है. So we will solve this question by taking log. So take log of both sides. दोनों साइड्स का हम log ले लें. Then we get log y equals to, you can write here log xy, and this can be written as y log x. Okay, now differentiate with respect to x. So because we have to find out dy or dx, so differentiate with respect to x, we get log y का differentiation, we get 1 upon y and dy or dx. Okay, then equals to, these are two functions, function first and function second. So differentiation of first, so first is y and second function हमारा multiply. Okay, now differentiation of second, that is log x, and multiply with first. So now 1 upon y dy over dx equals to log x and dy upon dx plus y log x का we got 1 upon x. So ये टर्म हम इस साइड लेके आएंगे, then we get 1 upon y dy over dx minus log x dy over dx equals to y upon x. Okay, यहां से take dy over dx as common because we have to find out dy over dx. So dy over dx अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, then we get 1 upon y minus log x. Okay, equals to y upon x. So this term can be written as, this term here we can write here dy over dx, जो हमारा LCM that is y. So we get 1 minus y log x equals to y upon x, or you can say dy over dx. देखिए 1 minus ये जो y है हमारा यहाँ पावर में, so we can write here log x to the power y. Okay, we can write here x to the power y upon y equals to y upon x. Now we can write here dy over dx equals to, ये हमारा डिवाइड है, so it becomes into y upon 1 minus log x to the power y. So equals to y into y, we can write here y square upon x into 1 minus log x to the power y. X to the power y, x to the power can be written as y because it is given in the question. So this can be write as 1 minus log x to the power y can be written as y. Okay, and this one can be written as y square upon x into log e. Okay, we know that one can be written as log e, or you can left it here. So आप यहां भी अगर इसको हम रहने दें, so this is the answer of this one. देखिए dy over dx y, ये हमारा मल्टीप्लाई जो है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो गया. Now we can write this value like this. Now y into y square, then x into 1 minus log x to the power y. This x to the power y is equals to y as given in the question. So we substitute here log y. So like this we can solve the question. This is the answer of this question. Now the next question
find dy or dx of question b part of question number 6, that is answer 6b. We have the question x to the power a y to the power b equals to x minus y a plus b. So we have to differentiate this one and find the value of dy or dx. So यहाँ पे अगर हम देखें, so x to the power y और y to the power x उस फॉर्म का एक क्वेश्चन नहीं है. So we can apply direct identities. So differentiate with respect to x. So LHS को differentiate करेंगे, x to the power a, y to the power b, और RHS का differentiation. So x minus y to the power a plus b. Okay. नाउ यहां हमारा जो अप्लाई होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड एफ एक्स इंटू जी एक्स का. सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स एक्स टू द पावर ए एंड मल्टीप्लाई द सेकेंड वन दैट इज वाई टू द पावर बी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन. सो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई टू द पावर बी एंड फर्स्ट वन मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर ए इक्वल्स टू, यहां पे हमारे पास दिस इज एक्स, दिस कंप्लीट वैल्यू ट्रीट एज एक्स, एक्स टू द पावर एन. So we get n is a plus b, and x means x minus y to the power n minus 1, and again differentiate the value that is at the place of x, that is x minus y. यहाँ पे हम इस complete value को treat करेंगे as x. So x to the power, this complete value treat as n. So x to the power n की identity apply होगी, that is n x to the power n minus 1. Okay, so like this. Now this can be written as y to the power b, y to the power b. Now यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा x to the power n, so it can be written as a x to the power a minus 1, then plus x to the power a. Okay, यहाँ y to the power b means b, y to the power b minus 1, and again differentiate of y with respect to x equals to a plus b. So equals to a plus b. Now x minus y, a plus b. So x minus y to the power a plus b minus 1. So a plus b minus 1, and differentiation of this one. So it can be written as here. So equals to, देखिए this is LHS, so we write this equals to RHS is a plus b x minus y. So a plus b minus 1, and now differentiation of x is 1. x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस dy or dx. Okay. Now substitute some values if possible. So it can be written as, देखिए a x to the power a minus 1 and y to the power b, this value, plus b x to the power a y to the power b minus 1 and dy or dx equals to a plus b. So a plus b into x minus y. So देखिए x minus y a plus b, x minus y a plus b is equal to x to the power a y to the power b. So it can be written as x to the power a y to the power b. Okay, and power minus 1. देखिए this can x minus y and a plus b minus 1. This value can be written as x minus y to the power a plus b upon x minus y. Okay, like this. So upon, we can write here upon x minus y, because power is minus 1. So minus 1 को हमने upon में लिखा, ये टर्म as it is रखी, और यहां से x minus y a plus b, x minus y a plus b, substitute x to the power a y to the power b. So it can be written as x to the power a y to the power b upon x minus y. So ये वैल्यू मैंने यहां पुट की है into
1 minus dy or dx. Okay, now solve this. So we get, देखिए हमारे पास एक तो जो बात करें dy बाई डी एक्स, दिस इज इन डिवाइड, सो इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई. सो डिवीजन हमारा मल्टीप्लाई होके जब इस साइड आएगा, सो मल्टीप्लाई में होगा, देन वी गेट हियर वी गेट x माइनस वाई इंटू, ये डिवाइड वाला जो है x माइनस वाई हमारा मल्टीप्लाई होगा इस साइड में कन्वर्ट होगा, देन वी गेट a x टू द पावर a माइनस वन y टू द पावर b प्लस b x टू द पावर a y टू द पावर b माइनस वन. नाउ dy और dx इक्वल्स टू, ये हमारा साइड चेंज हो गया, हियर वी गेट a प्लस b and x to the power a y to the power b into 1 minus dy or dx. Okay, now solve this. So if we multiply with x, if we multiply all this term with x, then we get here x multiplied by this one, so we get a x, x यहाँ पे एक पावर कम है वो यहां से इंक्रीज हो जाएगी, so here we get a to the power a x to the power a. Here we get a, now this is a, x multiply with this one, so we get x to the power a, then y to the power b. Okay, now multiply with this this x with this one, so we get plus b x to the power a plus 1 y to the power b minus 1 dy or dx. Okay, now multiply with this minus y, so we get minus, here we get minus a x to the power a minus 1 and y to the power b plus 1. Now multiply with this y with this term, so we get minus b x to the power a and y to the power b dy or dx, dy or dx. ये हमारा LHS. Now RHS becomes a plus b into x to the power a y to the power b minus a plus b and x to the power a y to the power b and dy or dx. Okay, now if we solve these, then we get, देखिए हमारा एक dy dx यहाँ पे इस टर्म में है और एक हमारा dy dx यहाँ इस टर्म में है और एक हमारा dy dx यहाँ इस टर्म में है. So taking dy or dx as common in all three terms, we get here b x a plus 1 y b minus 1. Okay, now from this term we get minus bx a y to the power b. Now from this term we get plus a plus b, or you can say a x to the power a y to the power b and plus b x to the power a y to the power b. So ये तो हमारा हुआ यू कैन से कॉमन, देन इक्वल्स टू, अब हमारे पास RHS में एक टर्म तो ये है, दिस टर्म मीन्स a x to the power a y to the power b प्लस b x to the power a y to the power b. सो एक टर्म तो ये है हमारी, इस टर्म को हमने सॉल्व करके लिख दिया. एक टर्म हमारे पास ये है, सो ये नेगेटिव है, जब साइड चेंज होगा so it becomes positive, so plus a x to the power a minus 1 y to the power b plus 1. okay, और एक हमारे पास ये टर्म है, जब साइड चेंज होगा so it becomes negative minus a x to the power a and y to the power b. okay, now simplify these terms, so we get here, देखिए b x to the power a y to the power b, b x to the power a y to the power b, पॉजिटिव एंड माइनस कैंसिल आउट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट, और यहां हमारे पास वी गेट
dy over dx equals to, then we get bx a plus 1 and y to the power b minus 1 plus a x to the power a and y to the power b equals to, in this term, minus axa yb plus axa yb, so cancel out these two terms. Okay, and here we get b x to the power a y to the power b plus a x to the power a minus 1 and y to the power b plus 1. Now take some value common. So देखिए यहाँ से b x to the power a y to the power b minus 1 y to the power b minus 1 we can take common. So you can say that dy or dx into, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूं देन वी गेट x to the power a, एक कॉमन यहाँ से, क्योंकि x to the power a plus 1 और यहाँ x to the power a, so x to the power a कॉमन and y to the power b minus 1 कॉमन. सो हियर हमारे पास एक तो यहाँ रहेगा b, नाउ x to the power a कॉमन आ गया, देन एक हमारे पास यहाँ रहेगा x, ओके, y हमारा कॉमन आ गया, देन प्लस एक हमारा a कॉमन और b माइनस 1 कॉमन आया है, सो हमारे पास यहाँ एक y और रहेगा. ओके, इक्वल्स टू, यहां से अगर हम बात करें b, सो एक तो x टू द पावर a माइनस 1 कॉमन और एक y टू द पावर b कॉमन. सो हियर वी गेट b x टू द पावर a मीन्स x एक हमारा रह गया, a माइनस 1 कॉमन आ गया, देन x ये कॉमन हो गया, प्लस a, ओके, नाउ a माइनस 1 कॉमन हो गया, देन b कॉमन हो गया, देन y. Okay, so bx plus ay and bx plus ay cancel out. Okay, here we get dy over dx equals to x to the power a minus 1 y to the power b upon x to the power a and y to the power b minus 1. So देखिए जो हमारा न्यूमिनेटर है वहां पे y to the power b है और डिनोमिनेटर में y to the power b minus 1, मीन्स न्यूमिनेटर में y का एक पावर ज्यादा है, सो कैंसिल आउट होके ऊपर हमारे पास y रहा और यहाँ पे x टू द पावर a माइनस 1 एंड x टू द a, सो यहाँ पे अपॉन में x, सो dy over dx is y upon x. This is the solution of B part of question number 6. Now come for the 7th question. The question number 7 is, 7th question is ex plus ex square plus up to e to the power x5, so ex cube, ex4 plus ex5. Okay, now differentiate with respect to x, so d over dx e to the power x plus d over dx e to the power x square plus d over dx e to the power x cube plus d over dx, okay, e to the power x4 plus d over dx e to the power x5. Okay, now it can be written as e to the power x का differentiation e to the power x plus now differentiation of ex square, so it will treat as a x, so e की power x means e की power x and यहाँ पे x की जगह हमारे पास x square and again differentiate of x square, now plus same e to the power x cube and again differentiation of x cube plus e to the power x4 and again differentiation of x to the power 4 plus e to the power x5 and again differentiation of x to the power 5. Okay, so here we get equals to e to the power x का differentiation e to the power x plus x square का differentiation we get 2x, differentiation of x square is 2x because apply x to the power n and multiply with this one means ex square plus now differentiation of x cube is 3x square and multiply with this one, so 3x cube
plus x to the power 4 का डिफरेंशियल 4x क्यूब and multiply with e to the power x 4 plus 5x to the power 4 and e to the power x to the power 5. This is the differentiation of question number 7th A. Okay, now come to question number 8, B part of 7th B. That is, we have to differentiate this one. So this is given as e root x. So differentiate with respect to x. So अगर हमें x के respect में इसका differentiate करना हो, then we get d over dx root e to the power root x. So first of all apply d over dx root x. d over dx root x. This is root and x is equal to here e to the root x. यहां पे इन दोनों को कंपेयर करें, देन वी गेट जो x है, x की जगह हमारे पास क्वेश्चन में e रूट x है एंड वी नो दैट d ओवर dx रूट x इज 1/2 रूट x. सो इसका जो डिफरेंशिएशन दैट इज 1/2 रूट x और x की जगह हमारे पास है e रूट x एंड अगेन डिफरेंशिएट ऑफ दिस दैट इज जो x की जगह है दैट इज e रूट x. ओके, सो नाउ it is equal to 1/2 root e root x. Now differentiate of this e to the power x means e to the power root x and again differentiate that is at the place of x, that is root x. So we get 1/2 root e root x into e root x and differentiation of this is 1/2 root x. Okay, so this value can be written as देखिए e root x upon 2 into 2 4 then root x and root e root x. Okay, this is the solution of answer of B part of question number 7. Okay, now come for the add question. Eighth question is we have to differentiate cos x. So cos x upon log x. So now differentiate with respect to x. So we get d over dx cos x upon log x. Okay, now it can be written as, देखिए differentiate करना है, so fx upon gx. यहां पे अप्लाई होगा d over dx fx upon gx. So it can be written as gx का square means log x का square, then gx means log x and differentiation of fx means cos x minus cos x and differentiation of gx that is log x. Okay, now it can be written as log x, this is log x and differentiation of cos x is minus sin x minus this cos x and differentiation of log x is 1/x upon log x and whole square of this. So take the LCM. So we get LCM जो है यहाँ पे अपॉन में x है, so we get x as LCM of this term and this term. So it becomes x sin x log x प्लस cos x और यहां से हमने नेगेटिव सिंबल कॉमन लिया, देन इनटू log x होल स्क्वायर ऑफ दिस. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ A part of question number 8. Okay, now come for the B part, that A part of question number 9. So answer 9A, that is y root 1 minus x square equals to sin inverse x. Okay, so differentiate with respect to x. You can say differentiate with respect to x. So we get
first into second, there are two functions. So differentiation of first means d over dx y, and first multiply, so multiply 1 minus x square root, then plus differentiation of second one, so d over dx root 1 minus x square and multiply by first, equals to differentiation of sine inverse x. Now this can be written as root 1 minus x square dy over dx plus y. Now apply d over dx root x identity here. जो हमारा x है उसकी जगह वैल्यू है 1 minus x square. So it can be written as 1 upon 2 root x means 1 minus x square, and again a differentiation of d over dx, that is 1 minus x square. Okay, equals to differentiation of sine inverse x is 1 upon root 1 minus x square. So now this value can be written as root 1 minus x square dy over dx plus now y upon 2 root 1 minus x square. Now if we simplify this, differentiation of 1 is 0 and minus differentiation of x square is 2x equals to 1 upon root 1 minus x square. Take root 1 minus x square LCM in both terms, so we get here, take 2 also, you can cancel out this 2 with this 2. Okay, so take root 1 minus x square LCM, so here we get 1 minus x square, then dy over dx. Now ये 2 हमारा कैंसिल हुआ, प्लस इंटू माइनस वी गेट माइनस, एंड x इंटू y, so we get xy equals to root 1 minus x square. So यहां से हमारा कैंसिल आउट, then we get 1 minus x square dy over dx equals to 1, और ये जब साइड चेंज होगा तो प्लस xy. So now dy over dx equals to 1 plus xy upon 1 minus x square. So this is the solution of and A part of question number 9. Now come for the B part of question number 9, that is B part is answer number 9th B, that is y root 1 plus x equals to root 1 minus x. So differentiate with respect to x, we get फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएशन ऑफ y जो हमारा सेकंड है दैट मल्टीप्लाई. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वन, सो 1 plus x and multiply with first equals to differentiation of this one, so root 1 minus x. Now it becomes root 1 plus x. Now dy over dx plus y, यहां पे अप्लाई होगा d over dx root x आइडेंटिटी अप्लाई होगी हियर, सो वी गेट 1 upon 2 root 1 plus x. नाउ अगेन डिफरेंशिएट ऑफ 1 plus x इक्वल्स टू, यहां अगेन डिफरेंशिएट, यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी, सो 1 upon 2 root 1 minus and again differentiate 1 minus x. Okay, so now we get here root 1 plus x, so root 1 plus x, then dy over dx, यहां पे y upon 2 plus y upon 2 root 1 plus x. Now 1 का डिफरेंशिएशन 0 and x का डिफरेंशिएशन 1, so into 0 plus 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x1 इक्वल्स टू, हियर वी गेट 1 upon 2 root 1 minus x, and differentiation of 1 is 0 minus differentiation of x is 1. So now take LCM, 2 root 1 plus x LCM of LHS,
then here we get 2 into 1 plus x dy over dx plus y equals to minus 1 upon 2 root 1 minus x. So हमारा ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, देन वी गेट 2 इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई और डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, जब ये हमारा इधर आएगा मल्टीप्लाई होके, देन वी गेट रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. नाउ 2 इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई और डी एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड माइनस वाई. जब साइड चेंज होगा देन इट कन्वर्ट इनटू नेगेटिव सिंबल. ओके, नाउ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स. सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, देखिए 1 प्लस एक्स, दिस इज गिवन सिंस इन क्वेश्चन y, देखिए सिंस इन क्वेश्चन y रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स, दिस इज गिवन. सो यहां पे रूट 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन वाई. ओके, सो दिस वैल्यू कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन वाई. सो इट कैन बी रिटन एज 2 into 1 plus x dy over dx equals to minus 1 upon y. This value can be written as 1 upon y and minus y. So here we get 2 into 1 plus x dy over dx. Take y as LCM, so we get here minus 1 minus y square. So now dy over dx equals to 1 minus हमने कॉमन लिया, then we get 1 plus y square upon 2 into 1 plus x and y. So this is the dy over dx. This is the dy over dx for B part of question number 9.